Hello everyone. I'm coming for the second session of coordinate geometry here. Already on the last day, we have started with distance formula. Today we are going for problem solving of the distance formula. First we'll be finishing all this, then we'll go to the next step, that is the section formula and all, as per the plan we did. So today let's have a quick recap of what we got, and then we'll start with our problem solving. Okay, so last day, just one formula we studied, only one formula we did, that was the distance formula. So distance between 2 points, how did we find it? It was simply, if you consider A and B as x1, y1 and x2, y2, then your distance between AB is defined as simply the difference between the abscissa, then square of that, and then y1 minus y2, that is the distance difference between the ordinates whole square. And then we used to put a modulus sign here. The modulus, one of the students last day asked why modulus is needed. Modulus is needed because we assure you by putting the modulus that the quantity we are getting as a distance is positive. So that's the importance of this modulus sign. So it's not necessary that if you know it for sure that it cannot be negative, right, then you may not use the modulus sign. So this is what we studied. So now with the help of this only, we are going to solve a lot of many problems. So let us pick those problems. Okay, so the very first question, we did few problems on that day also. So that the points A 4,2, B 7,5 and C 9,7 are 3 points lie on the same line. So we can remember that if any 3 or more points will lie in the same line, one and the same line, we call those points as collinear. So this question might be asked by saying this also, that show that or examine that these points are collinear, right? So let us just try to do the problem. Once we go on doing, you will automatically understand how it will be proved. So now by using distance formula, that statement I am not writing, we are going to find what is AB equals. So AB equals, so you can find from here only, this is 7 minus 4 whole square, and then 5 minus 2 whole square. That leads us to say it as 7 minus 4, it will be giving you 3 square means 9, and then 5 minus 2 3 square, this is again 9. So under the root 18, that gives you 3 root 2 units. So this is the distance AB. Similarly, you work out what is BC, right? So BC, you can find this is 9 minus 7 whole square, and then 7 minus 5 whole square. And what you will get here, 9 minus 7 will give you 2. 2 square means 4. And then 7 minus 5, 2. 2 square is again 4. So here you will be getting this as 8, which you can write this as 2 root 2 units. And then the last option, last segment is AC. So you find what is the distance between AC as well. So for AC, I have to subtract from 9 this 4. So this is 9 minus 4 whole square, and then 7 minus 2 whole square. So this is giving you how much? 9 minus 4, 5, that is, it will be 25. And 7 minus 2, again 5 square is 25. So this will be root over 50. Together, if you try to like break it in least form, or that smallest, or mixed rather I can say, you'll be getting this as 5 root 2. So fine. So we have found the 3 distances. So now what we will do with distances? Just you see, with the distances, we now can calculate. See, clearly, you out of that, you try to identify the highest, right, or the longest distance possible. The longest is this one, AC. So just you find the sum of the remaining 2. So what you will get, AB plus BC, that gives you AC.
So what did you understand by these things? Actually, this is the condition of collinearity, because you can remember that whenever we get inequalities like say AB plus BC greater than or equal to AC, greater than AC, then we could say that these three measurements can be forming the sides of a triangle. This is known as a triangle inequality, which you got in 9 only. So whenever equality holds, this is only possible if the points are collinear, right? So I'll draw the figure, but now directly you write the answer. I'll explain it this. So this implies what happens? The points ABC are collinear. So if ABC are collinear, so they are asking whether they are lying in the same line or not. So they are lying in the same line. So you can write the conclusion yourself. So that way we can proceed for this question. This is an important question of collinearity. Okay. Now, next question. Are the points this 3, 2, minus 2, minus 3 and 2, 3 forming a triangle? So it is just the contrast problem of the first one. So in first problem, we were asked to examine if the points are collinear. Here they are asking whether this is forming a triangle. So there are only two options. Remember it. If you are considering 3 points in a plane, suppose these are the 3 points, you have only two options. Either they will form a triangle. If they will not form a triangle, then the other option is collinearity. So if somehow I can show that these points are not collinear, automatically it will be triangle. And not collinear can be possible to show whenever you write AB plus BC not equal to AC. That's all, right? So that is very, very important to show now. So now we are going to show. Acha, here we do not have the name of the points. So our first thing is to name the point, right? Because you have to make it a little formal. Earlier in the first question, we had the names. So pehle naming kar lete hain, right? Okay. Given points are, चलो इसको यहाँ पे ही नेमिंग कर देते हैं. We will not write separately that let A be the point this. No need to write it like this. It will be enough if you write it like this. So we have got these points. हमें points मिल गए. तो क्या करोगे फिर? By distance formula you will find the distances. Now AB equals. This time we can do it in a shorter way instead of showing all the calculations. So directly you can calculate it. Minus 2, minus 3. Minus 2, minus 3 will be giving you minus 5. That will be 25 because minus 5 whole square. And then minus 3, minus 2, again minus 5. That whole square will be making it 25. So overall it is 50. So my answer is 5√2 unit. ठीक है, चलो बढ़िया है. BC equals, you can find 2 minus minus 2, 4. 4 square will give you 16. And then 3 minus minus 3, 6. 6 square will give you 36. That leads you to conclude this as 52. 52, if you remember, 52 is, it is 2√13. 2√13. Okay, 52 is 2√13. And AC equals, you find AC, then it will be 2 minus this, it will be 1. Then 3 minus 2, it is also 1. That gives you √2. So you got these things. These are units. Now, what exactly we have to show? We have to now check that these are forming a triangle or not. So triangle is being formed by this particular points, means the points are not collinear. They are lying in the line. Sorry, they are lying in the plane, but they are not collinear. This is what you have to prove. Sorry, my gap is less here. Anyway, so now how you will prove it? Very easy to prove. Here, you need not write all the 3 triangle inequalities. You just prove it for one inequality. Which inequality you have to prove? You take
the smaller two sides, you take the smaller two sides and find their sum and check whether it is greater than the third side or not. That is the biggest side. Because if this is satisfied, automatically the other two relations will be satisfied. So now here, can you identify which one will be bigger? So obviously you can identify that this 52, it is the square root of 52. So this will be the biggest. This will be the biggest, right? So now I can write like this. Now, AB plus AC, smaller two sides. AB is 5 root 2 and this is root 2. So this is together giving us 6 root 2. So 6 root 2 you approximately work out. You need not get the complete value. The root 2 is something like 1.41, right? So 6 root 2 will be how much? You try to see. 6 root 2 will be 6 into 1.41 say. So then this is 6 4s are 6. Sorry, 6 1s are 6, 6 4s are 24, 2, then 8.46. So around 8.46 is the value of this sum. Now just check that this is greater than this 2 root 13, right? So easily, very easily you can identify 2 root 13, that is the measurement of BC, is obviously less than 8. How did you confirm? Because you see, instead of 13, if you consider here 16, square root of 16 will give you 4. In that case only this will become 8, but it is root over 13. So obviously it will be less than 4 units. That means 2 times of 4 units will give you 8 units. So it is ultimately less than 8 units. So I think it is clear. So you have found very clearly one option, that is AB plus AC is greater than the third side, that is BC. Now this itself is enough to conclude that if I keep the bigger side in the left side, then automatically it will satisfy the triangle inequality. So this is only one thing you have to prove. So this will tell you that therefore ABC are forming a triangle. ABC are forming a triangle. Sorry here, ये थोड़ा सा नीचे आ गया. So next day we'll see how to make up this. So this you have to see. So in a nutshell, you have to only check the inequality, triangle inequality, in order to check whether they are forming the triangle or not. So this is the next question. Okay. Now you come to the next. देखते हैं next क्या question है. So that these points, these are the 4 points, are the vertices of a square. So first of all, ये actually मैं नहीं करने से भी होगा. If I do not do, then also you can understand. You just see, I'll explain you in the figure. Then automatically you can do the problem, because more you work out, more you will be getting the results. So here, what I'll do, I'll give the name of the vertices as ABC, as we did earlier in previous question. You do the same idea. The first point is 1,7, 4,2, then -1, -1. You have to consider the points serially. This is a mistake and students can do, that they will take A here, B here, then C in place of D. It should not be the case. So now you try to justify. You are told that these points, these 4 points are going to form a square. Anyway, because we are told to show that it is a square, we have beforehand only considered a figure as a square. Okay. So now try to recall when a quadrilateral becomes a square. So here it is very easy things. We have to only check whether all 4 sides are equal or not. Right? This is one of the conditions. Once we check that all the 4 sides are equal, you are sure now that it is a rhombus. It may not be a square till now. To make it a square, or to confirm whether it is a square, you have to prove AC equals BD. So these are all involving the distance formula, and you all know how to apply the distance formula. So these 2 parts you have to show, right? So here, यहाँ पे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ. Actually, students commit mistakes. क्या mistakes commit करते हैं वो लोग?
they only show this part, सारे sides equal हो गए and वो square लिख दिए, but it is never necessary, sorry, it is never sufficient that being all four sides equal imply it to be a square, right? It is necessary but not sufficient. So you need to have this additional information, because sometimes if you get all the four sides equal but the diagonals are not equal, it will come out to be a rhombus, not a square. So please make sure that you prove this part as well. So this part will be for you. You please work out and check whether you get this is a square or not. Because it is written so, then definitely it will be a square only. Okay, so let's move on to the next question. Okay, this is a very good question. This is, I must not say important question, but it is a good question, which is a question which you like we opt for exam to set, right? क्या दिया है questions? Find the relation between x and y such that point xy is equidistant from 7, 1 and 3, 5. Equidistant का मतलब क्या है? At equal distances, दोनों का distance equal होगा. तो थोड़ा सा हम लोग एक फिगर बना लेते हैं, right? So that we can visualize this. बाकी तुम लोग कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे यहाँ पे अगर मैं xy बोल देता हूं, इस पॉइंट का नाम p रख देता हूं, तो बोला गया है कि this p is at equal distances from two different points. एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको दिया गया 7.7,1, जिसका नाम हम लोग रख देंगे a, और दूसरे वाले का नाम बोल दिया है 3,5. तो अगर ये होता है, ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है, तो मुझे एक रिलेशन निकाल के बताना है एक्स वाई का. बस इतना ही कहानी है. इसमें क्या गलती होता है, आई एम टेलिंग यू, बच्चे लोग क्या करता है, इस पी को मिडिल पॉइंट समझ लेता है ए बी का. यस, मिडिल पॉइंट कैन बी वन ऑफ द पर्टिकुलर ऑप्शन, बट नॉट इन जनरल. सो बी केयरफुल अबाउट दैट. तो इसमें क्या होगा, हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए इज इक्वल टू पी बी. नाउ अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला. But before distance formula, if you write this as PA square equal to PB square, what will happen? You can get rid of the roots. Square जो square root है उससे बच जाओगे distance का. तो PA मतलब क्या होगा, देखो, ये point और ये point का distance का square. तो I can write this as x minus 7 whole square, y minus 1 whole square, right? Similarly, PB निकालो. PB निकालने से क्या होगा, x minus 3 whole square and y minus 5 whole square. That's it. Okay. इसके बाद क्या करना है, इसके बाद और बाकी शायद मैं नहीं करने से भी होगा. You have to just expand it with the help of a minus b whole square, and everywhere a minus b whole square is linear. So out of all this, all x squares and y squares will be cut from both the sides. So I am writing the final answer here, right? तो यहां पे क्या रहेगा, -14x, और इस साइड से आ जाएगा +6x. तो मेरे पास रहेगा -8x. यहां पे रहेगा -2y, और यहां से आ जाएगा 10, तो ये +8y होगा. और कॉन्स्टेंट्स को देखते हैं, 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर. 3 स्क्वायर होने से 9, 5 स्क्वायर मतलब 25, तो 34. 34 -1 33, 33 minus 49, मतलब 49 minus 33 होने से कितना होगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, -16. So overall you cut the common factor -8. So your answer will come out to be this. So x minus y equal to 2 is the required relation, satisfied by x and y, right? So this is quite an important question in terms of your exam, right? So please practice this kind of questions. Okay, so now let's have the next question, right? Next question आपके सामने ही है. So it is again an important question. This is again an important question, and let me try to tell you, these questions I have picked up not directly from the book, but these all questions were set some time back in your board exams. So these questions are actually previous year's questions. So I'm including now only. Okay, fine. So क्या दिया है, पढ़ के देखते हैं.
राइट, पढ़ के देख के समझ लेते हैं पहले। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट निकालना है हमें, which is equidistant from these 2 points। चलो, ये एक्चुअली प्रीवियस प्रॉब्लम का जैसा ही है। पिछले वाले प्रॉब्लम में हमें एक्स वाई दे दिया था कि दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस 2 पॉइंट, लेकिन इस बार पॉइंट नहीं दिया है हमें। तो हम लोग एक राफली, बहुत ही राफली, ये नेसेसरी नहीं है कि आप फिगर बना ही दो, बट इफ यू ड्रॉ इट, इट विल बी इजी फॉर यू टू विजुअलाइज। मैं इसलिए एक राफली कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट्स को बना लेता हूं, देखता हूं कहां तक हमें साथ मिलता है इसका। ठीक है, तो एक पॉइंट हो गया 2-5। 2-5 होने से कहीं इधर होगा एक अप्रोक्सीमेटली। यू नीड नॉट रियली राइट द एग्जैक्ट पोजीशन, तुम्हें बस ये देखना है कि पॉइंट्स मेरा कहाँ है। ये एक हो गया। फिर आई एम सॉरी आई डिड अ मिस्टेक, दिस पॉइंट इज द ऑपोजिट साइड, एडिट, जस्ट अ मिनट, इसको मैंने अलग जगह पे डाल दिया। ये होना चाहिए 2-5, ये हो गया 2-5 अप्रोक्सीमेटली, एंड देन -2 9 कहीं ऊपर इधर होगा बी। ये दोनों पॉइंट, अब मुझे क्या निकालना है, दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस में आने वाला वो पॉइंट निकालना है जो एक्स एक्सिस पे आएगा। तो कहीं इधर एक पॉइंट होगा, यहां पे एक पॉइंट होगा। तो एक्स एक्सिस में आने से पॉइंट का क्या स्ट्रक्चर होता है, x1, 0, x1, 0 होता है, राइट। सो ये हमें पता है। तो मुझे ये p क्या है वो निकल के बताना है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन के ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस दोनों बराबर है, बस बढ़िया। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू स्टार्ट विथ। सो लेट अस स्टार्ट विथ, मेरे पास पॉइंट का आइडिया मैंने ले लिया, एक्स एक्सिस में आने वाला पॉइंट हमेशा x1, 0 जैसा दिखेगा। तो लेट अस स्टार्ट विथ दैट। तो क्या करेंगे, लेट p x1, 0 be the point on x-axis such that on x-axis such that PA equal to PB। बट अभी तक तो मैंने AB के बारे में लिखा ही नहीं, तो लिखेंगे अभी where A is the point 2, -5 and B is the point -2, 9. This way you can reduce the steps also, but still you have informed everything. So this way it is perfect. So now you apply the distance formula, but before that, as you did earlier, you make it PA square PB square. So अब explain कर दो क्या होगा इसमें, x1 -2 whole square, y1 तो 0 है, right? तो 0 -5, right? तो ये 5 हो गया, 5 स्क्वायर। फिर पीबी के लिए क्या होगा, x +2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये 9 स्क्वायर। ठीक है, चलो यहां से आप अगर सॉल्व कर दोगे तो x का जो वैल्यू मिलेगा x1 का, ये x1 है, तो दैट x1 you have to find. So now you can easily visualize that both side x1 square will be cancelled once you express it. चलो मैं इसको पूरा इस बार एक्सपांड कर ही देता हूं। So this is 4x1. So all you can do it, ये कोई बड़ा चीज नहीं है, 4x1, this is 4 and this is 81. So whatever is cancelled from both the sides, you do it. जैसे x1 square ये कट जाएगा, हमने काट लिए। 4 and 4 both will be cancelled, so we have cancelled that. अब बचा क्या है देख लो, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में -8x1 बचेगा, क्योंकि इस वाले को हमको लेफ्ट साइड में ले जाना है, और राइट साइड में क्या बचेगा, 81 -25, 81 -25। सो हाउ मच इट इज, -8x1, और यहाँ पे ये प्लस होगा, तो यहाँ पे ये आ गया 6, 7 -2 5, 56। तो व्हाट इज x1 इक्वल, x1 इक्वल टू -7, दैट्स ऑल, x1 इक्वल टू -7। सो आपको पॉइंट क्या होगा, देयरफॉर पॉइंट इज -7, 0. That -7, 0 is the point which is on the x-axis and is at equal distances from these 2 points. So this is
all about the distance formula only. Now you see how powerful it is. It's a very simple formula, but it is very powerful and it works really very good to solve such a beautiful problems, right? And these are really exam oriented problems. Okay, now let's move on to the next. Question number 6. Question number 6. Find the radius of the circle whose center is 3,2 and passes through the point -6,5. इसमें भी मैं हिंट्स दे देता हूं. आपको बस एक क्या बनाना है, फिगर बना लेना है. एक सॉरी, it is to be a circle. Just hold on please. Yes, एक सर्कल बनाना है और आपको देखना है कि क्या बोला है वो लोग. तो they have said that there is a center of the circle. सेंटर ऑफ द सर्कल कहां पे है? 3,2 में, राइट? और कहीं एक सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है. कौन सा पॉइंट है? जिसका नाम नहीं दिया है तो हमने P बना दिया. ये सेंटर के, सॉरी, इट इज पासिंग टू द पॉइंट -5,6. प्लीज मेक श्योर आई एम नॉट नाउ ड्रॉइंग द फिगर विथ रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम. जस्ट एक ग्राफली बनाया, इसीलिए आप क्वाड्रेंट को मत देखना किधर ड्रॉ किया हूं. तो ऐसे बना दिया. अब अगर इस क्वेश्चन का मैं पूछता हूं ये फिगर दिखा के कि आपको भाई रेडियस बोल, एकदम आसान है. रेडियस मतलब यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन O and P, और ये तो निकालना आता ही है. सो इट विल बी व्हाट? x1 minus x2 whole square. So you can write -5 -3. तो -8 square that is 64 and then 6 minus 2 that is 4. तो ये 16 हो जाएगा. तो this is going to give you 80 होने से 4√5. 4√5 unit is the required radius of the circle. Very easy. It's a 1 mark question. This will be 1 mark question. और इसमें अगर आप फिगर नहीं बनाओगे तो ये हो सकता है आपको लगे कि क्या क्वेश्चन दिया है, बट दिस इज नॉट बेसिकली ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. इनफैक्ट इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक है, चलो बढ़िया है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3, -4 फ्रॉम एक्स एक्सिस? एक्चुअली ये इट इज जस्ट द अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या नहीं वो देखने के लिए हम लोग ये देते हैं. ये एक्चुअली 10 का क्वेश्चन है ही नहीं. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ क्लास 9 में पूछते हैं ये. तो अब देख लो, देखने से ही पता चल जाएगा. -3,4 कहीं इधर होगा पॉइंट. -3,4 इज दिस पॉइंट. x के लिए -3, y के लिए -4. सो इट विल बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट. और हमें पूछा गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस. Meaning is that this length they are asking you to find, this distance. So obviously this distance is 4 units. This is 4 units, right? So 4 units below origin. Remember it. So because of that, this negative sign comes. ठीक है, ये फिगर से ही 1 मार्क का हो गया यहाँ पे जुगाड़. ठीक है. Okay, now question number 8. If the distance between the points A, coordinates are P, 4, B, 1, 0 is 5 units. What are the values of P? बहुत ही बढ़िया. इसमें तो और कुछ करने का है ही नहीं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्टली आप बोल ही सकते हो. AP इक्वल टू हाउ मच? 5. सॉरी, AB इक्वल टू 5. तो दोनों साइड में हम स्क्वायर कर देंगे, देने से ये 25 हो गया. एंड देन डिस्टेंसेस का ये मेजर कर ही सकते हैं आप लोग. पहले ही मैं ब्रैकेट इसलिए दे दिया so that I'll not commit mistakes if I make differences. तो क्या होगा? 1 minus P whole square. ठीक है. फिर 0 minus 4 whole square. 0 minus 4 whole square. So what ultimately you will be getting? इसको expand कर दो क्योंकि P का वैल्यू लेना है. ये एक ऑप्शन है. And if you do not want to expand this, then also you can go for this option which now I'm going to do. ये 25 है, ये 16 होगा. राइट साइड में आने से -16. So overall what I'm going to get is 1 minus P whole square equal to 9. So now you take the square root. So 1 minus P, if you take the square root, will be 3. Plus or minus 3. अच्छा, प्लस और माइनस 3 का मतलब क्या हुआ? एक बार आप प्लस लेंगे और दूसरे बार आप माइनस लेंगे. सो 2 मिलेगा P का वैल्यू. एक हो जा रहा है आपका -2 और यहां से P का वैल्यू हो जा रहा है आपका 4. सो यू हैव
two values. Therefore, P equals -2 and 4 are the required values. That's it. That's it. Okay? But this is really a very important question. No doubt, important doesn't mean that it is difficult question. बहुत लोगों को ये फील होता है कि कोई अगर important बोल लिया तो question difficult होना चाहिए. ऐसा नहीं है. It may be important and at the same time it may be easy. Right? That is depending on the question's concept. So that way, this question number 8 is a good question. 9. Question number 9. Let me have a look at question number 9. If the points A 4,3 and B x, 5 are on the circle with center dash, find a value of x. देखो फिर एक क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें आप अगर एक फिगर बना लोगे तो कोई टेंशन ही नहीं है. Let us just draw the figure and we have to see exactly, right? They have given you the center. The center say this is O and center coordinate is 2,3 and there are 2 points on the circle. एक पॉइंट A यहाँ पे है, हम लोग क्वाड्रेंट वगैरह नहीं मिलाए हैं, don't go for that. And then this is say x, 5. अब बोलो x का निकालना है वैल्यू, राइट? तो यहाँ पे हम लोगों ने तो इक्विडिस्टेंस बोल के नहीं दिया, बट हमारा अपना खोपड़ी काम करेगा यहाँ पे. क्या खोपड़ी के ये जो दोनों डिस्टेंसेस है दे विल बी इक्वल. क्यों इक्वल हुआ? बिकॉज दे आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. तो तुम्हारा क्या कंडीशन होगा, ये फिगर बना लेना बहुत बढ़िया से. क्लियरली हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्लियरली हम लोग लिखेंगे OA इक्वल टू OB. और कारण क्या होगा, मैं क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया हूं, कारण होगा रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. और इसके बाद वो जो इक्विडिस्टेंस वाला प्रॉब्लम है वो करके x का वैल्यू निकाल लो, राइट? दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड प्रॉब्लम. सो देखो प्लेन ज्योमेट्री हमने जो सीखा था, कभी भी सर्कल का हमने प्लेन ज्योमेट्री सीखा था, शायद सर्कल वी हैव स्टार्टेड इन क्लास 5. तो 5 में जो मिला था कि रेडियस सारे इक्वल होता है, वही कंसेप्ट आज भी हम लोग यूज करते हैं नाउ इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. So that's the beauty of maths, that everything what you studied earlier can be also required at any stage in your future study. Okay, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट आते हैं और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. If 3 points, ये जो 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट्स के बारे में बोला है. If these 3 points, these form an equilateral triangle. Equilateral triangle का मतलब है all sides are equal. All sides are equal. एक ट्राइंगल का सारे साइड्स इक्वल होने से इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं. तो फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा? इसमें भी कोई करने लगेगा नहीं, राइट? सो इसमें तुम्हारा सबसे पहले क्या कंडीशन आएगा? डायरेक्टली दिस टाइम यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अच्छा, यहाँ पे तो हमने पॉइंट्स का नाम ही नहीं दिया, सो इसमें एक स्टेटमेंट हमको लिखना पड़ेगा. कैसे लिखेंगे? लेकिन अभी मैं काटकुट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC. अब AB BC के बारे में नहीं बोला तो वेयर लिख के बता दूंगा. A कौन सा पॉइंट है? ये जो पहला वाला पॉइंट. B कौन सा पॉइंट है? B सेकेंड वाला पॉइंट. सॉरी 3,√3. 3,√3. और C कौन सा पॉइंट है? इट इज द थर्ड पॉइंट 3, और तुमको लेमदा निकालना. यू नीड टू फाइंड द लेमदा. तो बहुत बढ़िया है. लेमदा कैसे निकालोगे? कोई भी 2 डिस्टेंस पकड़ लो यहां से, बट 2 डिस्टेंस हमको इक्वेट करना पड़ेगा. सो ऑब्वियसली वी विल ऑलवेज ट्राई टू रिलेट द ओरिजिन, राइट? बढ़िया बुद्धि उसी में है, ओरिजिन को रिलेट करो. तो इसका मतलब यू पिक AB एंड यू इक्वली कंसिडर द इक्वलिटी ऑफ BC, सॉरी AC, डू नॉट कंसिडर BC. तो इसमें क्या होगा, अभी बेनिफिट तुम्हें खुद से पता चल जाएगा. हमने स्क्वायर कर दिया, इसमें देने के बाद AB स्क्वायर अगर पकड़ेंगे तो देखो 3 - 0 होल स्क्वायर डायरेक्टली कितना होगा? 9. ठीक है, ओके. √3 - 0 होल स्क्वायर कितना होगा? 3 हो गया. बस एक कहानी खत्म. AC का बोलो भैया, AC का क्या करोगे? 3 - 3, 3 - 0, 9 हो गया. अच्छा, बहुत बढ़िया. लैम्डा -0 होल स्क्वायर कितना होगा? लैम्डा स्क्वायर हो गया. तो लैम्डा कितना हुआ? लैम्डा इक्वल टू प्लस और माइनस √3 हो गया. लैम्डा इक्वल टू प्लस और माइनस √3. तो लैम्डा का 2 वैल्यू मिल गया हमें. वी गॉट 2 वैल्यूज फॉर लैम्डा व्हिच आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज.
प्लीज सी दिस, इसमें हमने क्या बुद्धि लगाया, वी हैव इन्वॉल्व्ड ए इन बोथ द रिजल्ट्स। द रीजन इज वेरी क्लियर कि इसमें हमने ओरिजिन को लिया था, ओरिजिन दोनों कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका कैलकुलेशन हमें आसानी से करना पड़े हम कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव चोजन। बट अगर कोई स्टूडेंट ए बी इक्वल टू बी सी भी ले लेता है, स्टिल दे विल बी गेटिंग द सेम रिजल्ट, बट उनका कैलकुलेशन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। सो दैट्स व्हाट इज ऑल्सो ए पॉइंट जहां पे एक स्टूडेंट्स को ये जस्टिफाई करना आना चाहिए एग्जाम में कि भैया कौन सा पॉइंट लेने से मेरा क्वेश्चन सबसे आसानी से करेक्टली निकलेगा। दैट विल सेव द टाइम, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चन सेट करेंगे हम लोग, हम दिमाग में ये रखेंगे कि स्टूडेंट विल चूज दिस। सो उसी हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन का टाइम सेट करेंगे। सो बी वेरी वेरी अलर्ट अबाउट दैट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, come to the question number 11. The coordinate of a point A on y-axis is, sorry, coordinate नहीं, ordinate. Ordinate means y coordinate. कोई एक पॉइंट जो y एक्सिस में है उसका ऑर्डिनेट, मतलब y कोऑर्डिनेट इज 5 एंड b हैज इट्स कोऑर्डिनेट एज -3,1। अब लेंथ ऑफ ए बी निकालो। ये भी देखो, जब तक ये प्रॉब्लम हम लोग विजुअलाइज नहीं करेंगे तब तक हमें लगेगा नहीं कि ये इजी है, बट ये एक्चुअली कुछ भी प्रॉब्लम ही नहीं है। सो क्या बोला है देखो, सबसे पहले हम लोग b को एक रफली बैठा लेते हैं। b कहां आएगा, -3,1, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब -3,1 कहीं इधर आएगा, राइट। दिस इज द पॉइंट -3,1। और दूसरा वाला पॉइंट किस में है, y एक्सिस में है। कहां पे, जिसका ऑर्डिनेट 5 है, मतलब y कोऑर्डिनेट 5 बोले तो ओरिजिन के ऊपर, तो कहीं इधर होगा। ये एक्चुअली 0,5 के बारे में बोल रहा है। दिस इज द पॉइंट। अब वो लोग पूछा है ये वाला डिस्टेंस निकाल के बताओ भैया, तो ये वाला डिस्टेंस भी भले मेरे को बताना पड़ेगा क्या, यू कैन इजिली फाइंड, right? It is simply the distance between A and B, where the point A is very clearly 0,5. So ये कर लेना भैया, इसको मुझे करके देने का जरूरत नहीं है। You all can do it, I'm very sure. उतना तो अभी समझ आ ही गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है देखो, find a point on y axis which is equidistant from both these two points. तो हमने थोड़ी देर पहले एक्स एक्सिस वाला कहानी किया था, तो इसमें y एक्सिस का होगा। सो यहाँ पे हम जो ये पॉइंट पकड़ेंगे, पॉइंट ऑन y एक्सिस, इसको हम p नाम देंगे और क्या पकड़ेंगे, 0,y1, और इनका नाम a पड़ा हुआ है, b पड़ा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, AP इक्वल टू BP। इसके बाद बाकी कहानी आप जानते हो। सो इसमें और मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बट रिमेंबर दिस इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर these are the vertices of isosceles triangle or not. These are the vertices of isosceles triangle or not. Just please hold in for 1 minute. ओके, सो क्या दिया है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस का मतलब है टू साइड्स इक्वल, कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड हमें इक्वल मिल जाए। अभी देखो यहाँ पे मैं जब फिगर एक बनाऊंगा, आई कैनॉट डेफिनेटली से दैट दिस पॉइंट विल बी कमिंग हियर, दिस पॉइंट विल बी कमिंग हियर। मैं नहीं बोल सकता, बिकॉज बिगिनिंग में मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि कौन सा डिस्टेंस इक्वल होने वाला है। सो इसमें अगर मैं ट्राइंगल बना भी देता हूं तो मैं गलत हो सकता हूं। सो भले ही मैं इसको बना के रखा हूं, बट व्हेन आई डू, आई विल फर्स्ट फाइंड द डिस्टेंसेस। तो मैं क्या करूंगा, गिवन पॉइंट्स आर, गिवन पॉइंट्स आर, ए को बना देते हैं, कौन सा पॉइंट है, ए इज 5,-2, बी इज द पॉइंट 6,4 एंड सी इज द पॉइंट 7,-2। ठीक है। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, यू ऑल राइट दैट वर्ड, बिकॉज एग्जाम में हम वो चाहते हैं एज एग्जामिनर। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द डिस्टेंस। कैसे होगा, 6 - 5, राइट, x2 - x1, ये है ना, तो 6 - 5, 1 होगा, 1 का स्क्वायर, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। 4 - -2, 4 - -2, 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36।
So that gives us root over 37 यूनिट। ये हमें एक मिल गया, चलो बढ़िया है। Then BC, we will find BC. So BC मतलब 7 minus 6 कितना होगा? 7 minus 6 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। फिर -2 -4 -6 का फिर स्क्वायर करोगे तो 36, तो अल्टीमेटली 37 यूनिट्स। लास्ट में क्या बचा है? AC बचा है। आप ध्यान से देखो, अगर ये आइसोसेलेस होना है तो दो ही साइड्स इक्वल होगा, दो तो मिल गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वाला निकल रहा है। थर्ड वाला क्या निकलेगा? AC। तो 7 minus 5 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। देन -2 -2 ये 0 हो जाएगा, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 2। सो यहां से आपको बहुत ही क्लियरली दिख रहा है, यू कैन सी दिस वेरी क्लियरली दैट ये जो दोनों डिस्टेंसेस है, ये दोनों डिस्टेंसेस का मेजरमेंट होना चाहिए 37 अंडर द रूट। और ये क्या होगा? वर्टेक्स B कॉमन है, तो यहां B होगा, तो ये A एंड ये AB एंड BC, तो ये C होगा। एंड दिस डिस्टेंस इज 2 यूनिट, राइट? सो दिस इज व्हाट द प्रूफ इज। सो यहां से डायरेक्टली आप बोल दो, देयरफॉर AB इक्वल टू BC एंड, राइट, AB इक्वल टू BC एंड एक काम करेंगे हम लोग, एक ये डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, इसमें एक थोड़ा सा पेज है, देयर इज ए स्मॉल क्रैक हियर। मैं बोलूंगा कौन सा क्रैक है, मैं पहले आंसर लिख देता हूं आपको। लेट मी राइट द आंसर। ये डायरेक्टली आप मत लिखो, अभी क्या लिखेंगे? क्लियरली ABC form a triangle and AB equal to BC, right? Therefore triangle ABC is isosceles. तो आप लोगों को ये लग रहा होगा क्या जरूरत पड़ा कि ABC ट्राइंगल फॉर्म करता है बोल के मुझे बोलना है? बस यही तो तोड़ है। कभी हम लोग क्या करेंगे, कभी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि चेक इफ दिस पॉइंट्स आर फॉर्मिंग एन आइसोसेलेस ट्राइंगल और नॉट। सपोज हमने दे दिया ऐसे 3 पॉइंट, ध्यान से सुनोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूं। और मान लो आपको मिल गया कि AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और आप लोग धड़ाधड़ बोल रहे हैं बिकॉज देयर आर 2 साइड्स व्हिच आर इक्वल, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अरे भाई ये ट्राइंगल ही नहीं बन रहा है, आइसोसेलेस कैसे होगा? क्यों ट्राइंगल नहीं बन रहा है? बिकॉज यू कैन सी BC इज इक्वल टू सम ऑफ दिस टू, ये तो पॉइंट्स कोलिनियर हो रहे हैं ना। तो बी वेरी वेरी केयरफुल, कुछ ट्राइंगल्स में आपको बहुत ही केयरफुली रहना चाहिए। इक्विलेटरल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इक्विलेटरल, द बिगेस्ट प्रॉब्लम कम्स विद आइसोसेलेस। सो बी केयरफुल अबाउट when they are asking you to prove that a triangle is isosceles. Make sure that you prove first or observe first that they are forming a triangle. This is very important. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, देखो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको सीरियली क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स अगर मैं बना देता हूं तो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा और क्यों बनेगा, व्हाट इज द रीजन? ठीक है, देखते हैं इसमें कोई एक्सेप्शन है या नहीं। आई रियली डोंट नो वेदर देयर विल बी एक्सेप्शन और नॉट। तो हम लोग एक एक करके करते हैं, उसके बाद हम लोग दिख जाएंगे कि एक्सेप्शनल है या नहीं है। कुछ ऐसे ही रफली एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। वी रियली डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल वी आर गोइंग टू गेट एंड वी आर नॉट श्योर वेदर क्वाड्रिलेटरल मिलेगा ही, राइट? ऐसे ही हम लोग पहला वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, इसका नाम A रखते हैं, वर्टेक्स को -1 -2 करते हैं, सेकेंड वाले को कर देते हैं 1,0 दैट इज B, देन नेक्स्ट इज C -1,2, D -3,0। अच्छा, अब क्या करना है, सबसे पहले हम लोग दिमाग में ये डाल लेते हैं कि दिखाना क्या है हमको, हमें कोई एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में बोलना है। एंड इफ यू कैन रिमेंबर, quadrilaterals are basically defined
on the measurements of its sides and the diagonals measurements. Indirectly, they are saying कि पहले आप इनका जो साइड्स का डिस्टेंस हो वो निकालो और डायगोनल का डिस्टेंस हो वो निकाल के रखो. Then we'll observe and then we'll comment on it. Without that, you cannot comment. So, सबसे पहला जो हमारा काम होगा to find their sides, that distance and the diagonals. तो पहले AB निकाल लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी से निकाल लेते हैं because you all know that distance formula can be used now. तो 1 - 1 ये हो जाएगा 4. डायरेक्टली कर सकते हो अभी. ये भी हो जाएगा 4, that is 8 मतलब 2√2 हो गया. Then you find what is BC. BC will be also, it is 4 and then 4. Oh, very good. This is 2√2. And then CD. CD will be what? 1. ये हो जाएगा फिर 4 और ये भी 4. Okay, we are going towards all sides equal, I think. Let me see. Then yes, it will be 4 and 4. Okay, all sides equal, right? We got AB equal to BC equal to CD equal to AD. But we are not at a position now to conclude for a final conclusion. We have option. Now, अभी हमारे पास दो ऑप्शन खुल गए. It may be a rhombus, it may be a square. But ये तो कंफर्म है कि rhombus तो है, rhombus है. अब मेरे पास बस ये कंफर्म करना है कि रियली इट इज ए प्योर रंबस व्हिच इज नॉट अ स्क्वायर या फिर ऐसा रंबस जो एक स्क्वायर भी है. तो वो डिसाइड करेंगे हम लोग बाय फाइंडिंग द डायगोनल्स. सो यू फाइंड द डायगोनल्स. एसी निकाल लो. एसी कितना होगा? एसी हम लोग जब ऐसे निकालेंगे ना ये वाला तो क्या होगा? -1 - 1 ये तो 0 हो गया. -1 + 1 होगा. एंड देन 2 - 2 4 हो जाएगा. तो 4 का स्क्वायर 16 हुआ. तो दिस डिस्टेंस विल बी 2. फाइन. एंड देन BD विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा फिर 4 मतलब 16 और ये 0. तो दैट इज 4. दैट्स इट. सो क्या मिला हमें? AC इक्वल टू BD. तो ओवरऑल देयर आर 2 पॉइंट्स नाउ. एक तो हो गया सारे साइड्स इक्वल और on the top of that both the diagonals are equal. So क्या बोलेंगे हम लोग? It is a quadrilateral whose all 4 sides are equal and the diagonals are equal. So ये पूरा जो कहानी है ये क्या इंप्लाई करेगा कि ABCD is a square. तो इसमें मैंने स्टेटमेंट ज्यादा नहीं लिखा. क्या लिखना पड़ेगा आपको? जब ये हो जाएगा ना यहाँ पे एक इक्वेशन स्टार लगा दीजिए, यहाँ पे एक स्टार डैश लगा दीजिए and then you say कि star and star dash implies that all the 4 sides are equal and both the diagonals are equal, and hence this is a square. So that's it. We have done it. So this is what you have to do. So with this, I would like to conclude today. ये दोनों आपके लिए homework है. This you try to do in the same way. All 4 sides you decide, diagonal you decide, and check whether they are forming some precise information about specific quadrilateral or not. जैसे मान लो आपको मिल गया सारे साइड्स इक्वल बट डायगोनल्स इक्वल नहीं हुआ तो इट्स रंबस. मान लेते हैं AB के साथ CD इक्वल हुआ, BC के साथ AD इक्वल हुआ. तो ये हो सकता है पैरेललोग्राम बने या फिर रेक्टेंगल बने. फिर डायगोनल बोलेगा. अगर डायगोनल इक्वल है तो रेक्टेंगल, डायगोनल अनइक्वल है तो पैरेललोग्राम. So this way you can easily justify. This way you can justify. So this is left for you. And then after this class, I'm going to share this class notes to you. I have added here 10 practice questions. So these are some good questions in last year's or maybe some previous year's questions. So this I would expect you to practice, and definitely if you will be having any problem, you will comment. You already know the channel link, so you comment on that, and then I'll be sharing my phone number as well, so you can connect me through WhatsApp as well. Okay, so that's it. Thanks for watching and thanks for attending the classes, and then we'll see on the next day with the section formula. Goodbye till then. See you.